बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। द ओएसआई फुल फॉर्म क्या है इसका? ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोवाइडिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग हाउ डाटा इज़ ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क्स। अब हम इसकी फर्दर वन बाय वन लेयर जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली इसकी जो लेयर है वो है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इज़ द बॉटम लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। It transmits streams of bits and define how the data is transmitted over the network and what control signals are used. Its main function is to control how a stream of bits is sent and received over the physical medium. ये इसके कॉमन प्रोटोकॉल दिए गए हैं फिजिकल लेयर के। उसके बाद फिजिकल लेयर क्या डिसाइड करती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया। द फिजिकल लेयर डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। ये भी डिसाइड करती है द बिट्स आर इनकोडेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन। द फिजिकल लेयर डिफाइन द टाइप ऑफ इनकोडिंग। Data rate physical layer defines the number of bits that will be sent in each second. उसके बाद है synchronization। synchronize का मतलब होता है हम आहंग होना, हम वक्त साजी। The clocks of sender and receiver are also synchronized. Line configuration, the physical layer defines the attachment of communication devices with medium. Transmission mode, the physical layer defines the direction of transmission between two devices, simplex, half duplex और full duplex. उसके बाद हमारी सेकेंड लेयर है डाटा लिंक लेयर। द डाटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ फिजिकल लिंक एस्टेब्लिश्ड एट लेयर वन। डाटा लिंक लेयर मस्ट डिसाइड द फॉलोइंग फ्रेमिंग। सबसे पहले क्या डिसाइड करती है? फ्रेमिंग। द डाटा लिंक लेयर डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बिट्स इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स। यानी कि जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स है ना, इनको मैनेजेबल डाटा यूनिट्स में कन्वर्ट करती है जिसको फ्रेम बोलते हैं। उसके बाद है फ्लो कंट्रोल। इफ़ द रेट ऑफ सेंडिंग डाटा इज़ मोर देन द रेट ऑफ रिसीविंग डाटा, डाटा लिंक लेयर क्या करती है? इम्पोजेज अ फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन। उसके बाद है एरर कंट्रोल। द डाटा लिंक लेयर डिटेक्ट एंड रीट्रांसमिट डैमेज्ड और लॉस्ट फ्रेम्स। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द डुप्लीकेशन ऑफ फ्रेम्स। फिर है एक्सेस कंट्रोल। इफ टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक, डाटा लिंक लेयर determines which device has control over the link at the given time. उसके बाद जो डाटा लिंक लेयर है वो डिवाइड हो जाती है टू सब लेयर्स में। एक है LLC, स्टैंड्स फॉर लॉजिकल लिंक कंट्रोल। इट इज़ द अपर सब लेयर। इट इंश्योर्स रिलायबिलिटी ऑफ फिजिकल कनेक्शन। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज मोस्ट कॉमनली यूज स्टैंडर्ड। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यानी कि PPP, पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल प्रोटोकॉल इज एन इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड at this OSI layer level. It used to communicate across point-to-point links. It is an important protocol for a wide area networking. उसके बाद है MAC, MAC भी बोलते हैं इसे। MAC stands for Media Access Control. It specifies how workstations cooperatively share the transmission medium. द IEEE 802.3 ये एक स्टैंडर्ड है। स्पेसिफाइज अ मीडियम एक्सेस मेथड नोज एज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग नेटवर्क कनेक्शन. It manages the delivery of data from source to destination. Network layer determines a logical path between the sender and the receiver. There may be many networks between two computers. This layer manages the send data, manages to send data from the source computer to the destination computer. The common protocol that operate at this level are IP, IPX and X.25. इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
सबसे पहले क्या है लॉजिकल एड्रेसिंग। द लॉजिकल एड्रेसिंग इम्प्लीमेंटेड बाय डाटा लिंक layer handles the addressing problems locally. If a packet passes the network boundary, another addressing system is required to distinguish the source and destination system. The network layer adds a header to the packet that comes from the upper layer. जो अपर लेयर से पैकेट आ रहा है डाटा का, ये नेटवर्क लेयर क्या करती है, उसमें हेडर इंक्लूड कर देती है। द हेडर इंक्लूड्स द लॉजिकल एड्रेसिंग एड्रेसेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। उसके बाद है राउटिंग। राउटर्स और गेटवेज आर यूज टू रूट पैकेट्स, रूट कहते हैं रास्ते को, पैकेट्स टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन व्हेन independent networks are connected together to form an internetwork. This mechanism is provided by network layer. उसके बाद फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर controls the flow of data. It ensures that messages are delivered error free. It divides large messages into small packets for efficient transmission. These packets are reassembled, checked for errors, and acknowledged at receiving side. Data is retransmitted if there are errors in this transmission. The common protocols that operate at transport layer are TCP, UDP, SPX, and NetBEUI. Some responsibilities of transport layer are service point addressing. Computer can run multiple processes at the same time. The source to destination delivery means the delivery from one computer to another and from one process of a computer to another process of another computer. Transport layer header include service point address or port address. The network layer gets each packet to correct computer. Transport layer gets entire message to the correct process on that computer. उसके बाद है segmentation and reassembly. A message is divided into segments. Each segment has a sequence number. Transport layer uses these numbers to reassemble the message correctly and on destination computer. उसके बाद है कनेक्शन कंट्रोल। ट्रांसपोर्ट लेयर कैन बी कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। A connection oriented transport layer establishes connection with transport layer of destination computer before delivering packets. The connection is terminated after delivering all data. A connectionless transport layer delivers each packet to the transport layer of destination computer as independent packet. फिर है flow control. Transport layer performs flow control end to end rather than across a single link. उसके बाद है error control. Transport layer performs error control end to end rather than across a single link. The sending transport layer ensures that the message is delivered to the receiving transport layer. Error correction is normally performed via retransmission. फिर हमारी फिफ्थ लेयर है वो सेशन लेयर है। सेशन लेयर establishes, manages and terminate user connection. A session layer session is an exchange of messages between computers. सेशन लेयर क्या है? सेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन कंप्यूटर्स. इट सिंक्रोनाइजेज यूजर टास्क. Synchronization involves the user of checkpoints in the data streams. If a failure occurs, only the data from the last checkpoint is retransmitted. यानी कि इसमें भी चेक पॉइंट्स होते हैं. अगर एक चेक पॉइंट के पास डाटा में कोई एरर आ गया तो उसी चेक पॉइंट से दोबारा से डाटा रीट्रांसमिट होगा. इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज वी वांट टू सेंड 1000 पेजेस ऑफ डाटा, कि हमने 1000 पेजेस डाटा सेंड करने हैं. चेक पॉइंट्स कैन बी यूज्ड आफ्टर ईच 100 पेजेस. इफ़ देयर इज़ एन एरर एट पेज 320, अगर 320 पेज के ऊपर कोई एरर आ गया है, द पेजेस फ्रॉम 301 विल बी रीट्रांसमिटेड. यानी कि 320 पे अगर कोई एरर आ गया तो पेजेस कहाँ से दोबारा सेंड होंगे?
from 301 will be retransmitted. Page from 1 to 300 will not retransmitted, यानी कि पेज नंबर 1 से 300 तक दोबारा रीट्रांसमिट नहीं होंगे। कहाँ से होंगे? 301 से होंगे। WinSock and NetBIOS are usually shown as functioning at session layer। फिर हमारी लेयर आ गई 6th लेयर, वो है प्रेजेंटेशन लेयर। द प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म डाटा रिफॉर्मेटिंग, डाटा कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। The common protocols that operate at presentation layer include SMB, NCP, and NFS. Data reformatting: when two computers exchange data, the data is exchanged to bit streams before it transmitted. Two computers may use different encoding technologies. The presentation layer at sending computer exchanges data according to the sender's format. The presentation layer at receiving computer changes the data according to the receiver format. Encryption आ गई फिर है the presentation layer encrypts data before transmission. It means that the sender transforms original information to another form and sends the resulting message over the network. The receiver again transforms the message back to its original form. It is called decryption. जैसे हम कोई भी मैसेज सेंड करते हैं, अगर हम उसको कोई पासवर्ड लगा दें, यानी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में ना रहे, वो किसी पासवर्ड की फॉर्म में अगर हम सेंड करें, तो दोबारा से वो जो रिसीवर है उसको ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे। ये बेसिकली इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है। कंप्रेशन में क्या होता है? कंप्रेशन का मतलब होता है कि एक ज़्यादा अमाउंट है डाटा की, उसको कम अमाउंट में, यानी कि उसका साइज मीन्स छोटा कर देना। डाटा कंप्रेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ टू बी ट्रांसमिटेड। नंबर ऑफ बिट्स को क्या कर देता है? वो रिड्यूस कर देता है। द प्रेजेंटेशन लेयर कंप्रेसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इनटू स्मॉल साइज। 7 लेयर हमारी जो है वो है एप्लीकेशन लेयर। द एप्लीकेशन लेयर इज द topmost layer of OSI model. It provides services directly to user applications. It enables the user to access the network. It provides user interfaces and support for services such as email, remote file access and transfer, shared database management, and other type of distributed information services. इसमें है फाइल ट्रांसफ़र, मेल सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज। फाइल ट्रांसफ़र में क्या है? इट अलाउज यूज़र टू एक्सेस, रिट्रीव एंड मैनेज फाइल इन रिमोट कंप्यूटर। मेल सर्विसेज में है इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़। डायरेक्टरी सर्विसेज में इट प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस sources and access for global information about various objects and services। तो ये था हमारा लेक्चर आज का, जिसमें हमने 7 लेयर्स OSI मॉडल की डिस्कस की। ये बेसिकली मैंने ना एक नोट्स की फॉर्म में ये सारा लेक्चर तैयार किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।